Good morning, class. In the last lecture, we have studied mean deviation. In that, mean deviation for row data, mean deviation for ungrouped data, group data. That means ungroup frequency distribution and group frequency distribution. So now, in this lecture, we have studied mean deviation for median. Let's start. Calculate the mean deviation. We can also call as MD, that is mean deviation about mean. अभी हमको इधर mean find करना है. Mean deviation about mean for the following data, means these one. So these are weight in gram, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 50. Means they are in a continuous way because of 50, 20, 20, 20 to 25 to 23, 30, 30 to 35. So they are a continuous way, means that is a group data. So what is fine? Calculate mean deviation about mean. हमको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन. वेट दिया हुआ है 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25 to 30, 32, 35, 35 to 40 and 45 to 45, 40 to 45. So number of items 7, 10 to 15 में 7 है, 15 to 20 में 12, 25 to और 20 to 25 में 16, 25 to 30 में 25 and 30 to 35 में 19, 35 to 40 में 15, 40 to 45 में 6. नाउ भी ये ग्रुप डाटा है, मीन्स कंटिन्यूस है. सो हमका इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. वी नो दैट मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं. दिस टू टर्म्स एडिशन डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 10 plus 15 divided by 2. Here 15 plus 20 divided by 2. Here 20 to 25 divided by 2. 25 to 30 divided by 2. 30 to 35 divided by 2. 35 to 40 divided by 2. And 40 to 45 divided by 2. इस सब का मिड पॉइंट फाइंड करने का. एंड दैट मिड पॉइंट इज अ xi एंड दिस इज अ फ्रीक्वेंसी मीन्स fi. हमको मीन फाइंड करना पड़ेगा, मतलब समेशन ऑफ fi in bracket xi minus x bar. So we know that x bar means mean, that is a summation of fi xi divided by summation of fi means. और ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, summation of fi xi minus x bar divided by summation of fi. We know that x bar is the mean, so that is summation of fi xi divided by summation of fi. And we know that xi is a mid value. हमको उसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. मीन्स इसके क्लास इंटरवल, दैट इज अ क्लास इंटरवल. दिस वेट इज अ क्लास इंटरवल. जो ऐसे दिया होता है उसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं. नो फाइंड xi मीन्स मिड पॉइंट, मिड वैल्यू. सो 10 plus 15 divided by 2 means 12.2. Here also same, addition and divided by 2, both addition and divided by 2. So they get these and these value. So this is the xi. And we know that number of item means frequency, that is fi. 7, 12, 16, 25, 19, 15 and 6. Here 7, 12, 16, 25, 19, 15 and 6. अभी हमको इधर समेशन ऑफ fi चाहिए, मीन्स होल समेशन चाहिए. सो 7 plus 12 plus 16 plus 25 plus 19 plus 15 plus 6 they give 100. So summation of fi means frequency, that is summation of fi is 100. Now we want summation of fi xi. So multiply by fi xi. So 12.5 multiplied by 7
here also, that is 87.5. So 17.5 multiplied by 12 to 210, 22.5 multiplied by 16, 27.5 multiplied by 25, they give 687, 32.5 multiplied by 19, they give 617, 37.5 multiplied by 15, they give 562.5. Here 22.5 multiplied by 6, they give 255.0. Now we want summation. So 87.5 plus 210 plus 360.687.5 plus 617.5 plus 662.5 plus 255, सबकी एडिशन मतलब 2780. अभी हमको दोनों मिल गया. सो मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई divided by summation of fi, means this divided by this. Here 2780 divided by 100, they give 27.80. This is the mean. नो अभी हमको एक्स बार मिल गया, एक्स आई भी है हमारे पास. सो अभी हम फाइंड करेंगे this mod and then multiply by fi. So mod means di is equal to xi minus x bar, means this xi minus this x bar. 12.5 minus 27, so minus 15, but here in the mod, so they give 15.3, or 17.5 minus 27.8, they give 10.3 because of mod. Here mod, so we can write in positive. 22.5 minus 27.8, they give 5.8, and 27.5, here also 27.8, but here 8 and here 5, so 0.3. 32 minus 27, they give positive, because these are a plus 4.7, and 37.5 minus 27.8, they use 9.7. 42.5 minus 27.8, they use 14.7. So these are a mod value, means di in a mod di is equal to mod of xi minus x bar. Now finding the summation of fi. So उससे पहले multiply by fi. So this term multiply by fi means 7 multiply by 15.3. So they give 107.1. Now 12 multiply by 10.3, 123.6. 16 multiply by 3.8, so 84.8. And 25 multiply by 0.3, 7.5. And 19 multiply by 4.7, they give 89.3. And 15 multiply by 97, they give 145.5. And 6 multiply by 14.7, they give 88.2. Now we want summation of all these, and summation of fi already we are calculated, that is 100. So take addition of this one, so they give 646. Now put the value in this one, mean deviation about mean. 646 divided by 100 means 6.46. So mean deviation about mean, that is 6.46. इस टाइप का सम हमने कल किया था, तो हमने रिवीजन कर ली. सो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए. सो बहुत इस टाइप के सम सॉल्व करो. मीन डिविजन अबाउट मीन, that is 6.46. Find mean deviation from mean. Here also same, only mean. In this example also about mean, and here also mean for following data. So here 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 means here continuous way. So they are a group data, and frequencies 4, 6, 10, 18, 9 and 10.
So marks obtained and number of students. So this is the interval class and this is the frequency and this is the group data. So हम डायरेक्ट मेथड करेंगे. Here are two method. That is the first method, डायरेक्ट मेथड. मीन्स जो भी हम ये फाइंड किया वही सेम मेथड से फाइंड करेंगे. एंड अनदर मेथड दूसरी है, वो मैं बताता हूँ अभी. फर्स्ट हम दिस मेथड से सॉल्व करेंगे. टेबल फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन. दिस इज अ क्लास इंटरवल 10, 20, 20 and this is a midpoint. We know that midpoint how to find. 10 plus 20 divided by 2, 20 plus 30 divided by 2 and 30 plus 40 divided by 2 and 45 50 divided by 2 and 50 60 divided by 2. 60 plus 70 divided by 2, they give 65 55 45 35 25 15. So they give this midpoint means xi. It is xi and we know that frequency fi 4 6 10 18 9 3, these are the frequency are given. Now we want multiply this. Fi multiplied by xi means fi multiplied by xi. So 4 multiplied by 15 that is 60. 6 multiplied by 25 150. 35 multiplied by 10 350. 45 multiplied by 80 810. 55 multiplied by 9 495 and 65 multiplied by 3 195. Now we want mean. For a mean, so हमको first mean find करना पड़ेगा. So mean is summation of fi xi divided by summation of fi. So first we take sum of fi, that is this 6 plus 10 plus 18 plus 9 plus 3, so they give 50, and 60 plus 150 plus 350 plus 810 plus 495 plus 195, so they give 2060. Now first mean find करेंगे. We know that x bar is equal to summation of fi xi divided by summation of fi. 2060 divided by 50, here 0 cancel and 5 divided by this, so 41.2. So mean is x bar is equal to 41.2. तो हमको डिफाइन करना होगा मीन्स इन मॉड xi minus x bar. So xi minus x bar means 41.2. So they are a minus, but in a mod they get positive 25.2. Here 25 minus 41 point, so they go 60. 35 minus 41, so they go 60.2 and 45 minus 41.2, they give 3.8 and 55 minus 41.2, they give 13.8 and 65 minus 41.2, they give 23.8. Now we want multiply by fi and then take a sum. So now 4 multiply by 26.2, they use 104.8, then 6 multiply by 16, 10 multiply by 6.2, 18 multiply by 3.8 and 9 multiply by 16 and 3 multiply by 23.8, so they gives these and these and this value. Now take addition. So 104.8 plus 97.2, 62 plus 68.4 plus 124.2 plus 71.4, so they give 528. And already we are finding summation of fi. So put in value this one. So mean deviation about mean, that is summation of fi in a mod xi minus x bar and summation of fi, so that is this. So 528 divided by 15, you know that it is a 15, so 10.56. so mean deviation about 10.56. This is another method. This is a very easy method. This one is a very easy method and this is another method. आप ये मेथड से सॉल्व करो या
ये मेथड से सॉल्व करो. दिस इज अनदर मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. आपको जो आती है उससे सॉल्व करो. अभी हम सेकेंड मेथड देखते हैं. फाइन टेबल फॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन. Now this is the class interval and this is the mid value. We know that how to find mid value. 10 plus 20 divided by 2. Here also same, 20, 30, 30, 40 and 40, 50, 50, 60 and 60, 70 and divided by 2. So that gives mid values. And this is the frequency. Now take a summation of frequency. They give 50. Now here we add these 50 plus 25 plus 30 plus 40 plus 55 plus 65 means summation of xi, and here divided by n. N is means 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So इसका summation of xi आया 240 divided by 6. They gives 40. No, they gives 40. So greater than 40 इसमें नहीं है. Now just greater than 40 means 45. So A is a 45. We write A is a here 45. And C means difference between them. Means this is क्लास हो गया. ये क्लास हो गया. अब इसका डिफरेंस 40 minus 50 means 10. So C is equal to 10. C is equal to 10. तो ये फॉर्मूला है मीन फाइंड करने के लिए बाय स्टेप डेविएशन मेथड. डेविएशन मेथड यूज करेंगे तभी हम ये इस टाइप का मीन फाइंड करेंगे. दैट इज A प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय सी. ओके, जो हमने पहले वाला स्टेप किया था उसमें मीन क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. दैट इज वेरी इजी. बट हमको एग्जाम में पूछा कि बाय स्टेप डेविएशन मेथड से करो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इसलिए ये लिख के रखो. मीन्स A प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई सी. ए कहाँ से लाया, हमने एक्स आई को पहले एडिशन किया. एंड हाउ मेनी नंबर 1 2 3 4 5 6. सो डिवाइडेड बाई 6, तो दैट इज 40. देन ग्रेटर दैन 40 नहीं है, सो जस्ट ग्रेटर दैन 40, दैट इज 45. एंड दिस इज अ क्लास. सो इसका डिफरेंस क्या है, 40 माइनस 50 मीन्स 10. 10 का डिफरेंस है उसमें. सो सी इज अ 10. तो अभी हम ये फाइंड करेंगे. समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई. Here d is equal to xi and here d is a xi minus a divided by c. Here a is a 45 and c is a 10. xi is a 15. So 15 minus 45 divided by c, that is 3. Now 25 minus 45 divided by 10, so minus 35 minus 45 divided by 10, so minus 1. 45 minus 45 divided by 10, so they give 0. Now 9 minus 45 divided by 10, so they give yes, divided by 10, so they gives this one. Sorry, 9 nahi, 55. Sorry, 55 divided by 55 minus 45 divided by 10, so they give 1. 65 65 minus 45 divided by 10, so they give 2.
Now this di multiplied by fi, so 4 multiplied by minus 3, that is minus 12, 6 multiplied by 2 minus 12, 10 multiplied by minus 1 minus 10, and 18 multiplied by 0 0. Now 9 multiplied by 1, that gives 9, and 3 multiplied by 2, that gives 6. Now summation of fi di, because we want summation of fi di, so it is 19 minus 19, whole sum of these, so they gives minus 90. We are already find summation of fi, that is 50, so we are put the value in this. 45 minus 19 divided by 15, 10, here 0 get cancelled, and 5 multiply by this and addition of this, but here minus, so 45 minus 0.9, that is 41.2, mean is 41.2. in another method we are all solved, that is 41.2. so हम इन दिस मेथड यूज करें या ये मेथड यूज करें, वैल्यू सेम ही आता है. so हम these are very easy to find mean deviation about mean. तो हम अब वाला यूज ज़्यादा से ज़्यादा अब वाला ही यूज करेंगे. तो सेम आया. now mean deviation about mean, we know that summation of fi xi minus x bar divided by summation of fi. now these are xi minus x bar, so x bar is 41.2, so 15 minus this 25 minus 41.2, so they gives this value all of, and then multiply by fi. so fi multiply by 26.2 means 4 multiply by 26.2, this multiply by this multiply by this, 10 multiply by this, and this multiply by this, here also multiply by this multiply by this, so they gives these 62, 97.2 and 104.2. now we want summation of this, so they gives 528. now 528 divided by 50, so it is a mean deviation about mean 10.56. so 10.56, so both the value of are same. so आप ये मेथड से करो या ये मेथड से करो, दोनों वैल्यू सेम आती है, बट हियर मीन फाइंड करने के लिए इजी जाता है और इधर थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, पर दोनों वैल्यू सेम आती है. नाउ कैलकुलेट मीन डेविएशन for the following data. Calculate here mean deviation. now here 40, 49, now 60, 79, 80, 99 and 100. so here are not a continuous, means ungrouped data. so there are ungrouped data, so we can also write here first term, we can write minus 0.5, here minus 0.5, in this one minus 0.5 minus 0.5, so they give 39.5, 59.5, 79.5, 99.5, here also 119.5, and this second term we can add 0.5, so 0.5, so 59.5, this 79.5, 99.5, 190.5 and 139.5. so we can write here in this way minus 0.5 and plus 0.5. so these are in a continuous way, means we can write here in a group data. इसको अनग्रुप डाटा है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मीन्स ये कंटिन्यूस ये नहीं है, इसलिए हम इसको हम कंटिन्यूस में लाएंगे, सो ये भी ग्रुप डाटा हो जाएगा. नाउ फाइंडिंग मिड पॉइंट, so addition of 2 divided by 2, addition of 2 divided by 2, same here, so they gives these value 49.5, 69.5, 89.5, 109.5, 129.5. now these are frequency already given 50, 300, 50, 20 and 60. now we take summation 1110
and multiply by this for finding mean. So this multiply by this, 50 multiply by this, so they gives this multiply by this multiply by this multiply by this, and this multiply by this, so give these and this one. Now take summation of Fixi, so 97,745. Now find the mean. So 97,749 divided by 1,110, so that gives 88.059. That is a mean. Now Xi means this minus mean, so 49.5 minus 88.059, so that gives these. So now this minus this, so this, so that gives this value. Now di, so Fi multiplied by di means 50 multiplied by 38.859. Here also multiply by all of, so they give this value. And take addition means summation of Fi di, so 40,990.81, and already we are finding summation of Fi. So put mean deviation about mean, that is summation of Fi in a mod. Xi means this is the d, so put value 40,990.81 divided by 1,110, so that gives 13.505. So mean deviation is 13.505. Here are a continuous way. So using group data, we here finding a median. Here finding a median. Find a mean deviation from मीडियन. अभी हमको मीन नहीं, अभी हमको मीडियन फाइंड करना है. सो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? दिस वे. मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. बट हियर मीडियन का फॉर्मूला ये है, ये भी लिख के रखो. मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू. वी नो दैट एन बाई टू मीन्स दिस डिवाइडेड बाई टू माइनस एफ ऑफ सी क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एफ एम मीन्स जो हमारा मिडल क्लास होगा उसका ऊपर की फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ ऑफ सी. दिस इज एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ एम मीन्स मिडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. दीज आर फ्रीक्वेंसी एंड एफ ऑफ सी मीन्स कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी जो मिडल क्लास की ऊपर की होगी वो. एंड दिस आर अ मिडल क्लास की फ्रीक्वेंसी. एंड सी इज अ डिफरेंस ऑफ दिस वन, सो 20 माइनस 30. These are a formula, ये ध्यान में रखो. एंड एल मीन्स लोअर वैल्यू ऑफ मिडल क्लास. मिडल क्लास की जो लोअर वैल्यू है दैट इज दिस 20. वी राइट 20. तो अभी हमको जब मीडियन दिया होगा तो हम क्लास इंटरवल लिख देंगे. नो फ्रीक्वेंसी, तो हमको मीडियन फाइंड करने के लिए ऑलवेज कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी चाहिए. So 5 plus 0 means 5, then 5 plus 8, so they give 13. Now 5 plus 15, so they give 28. Now 5 plus 8 plus 15 plus 16, so 45. Now 5 plus 8 plus 15 plus 16 plus 6, so they give 15. Now we know that sum of these is n is equal to 15. Sum of frequency, that is n, that is 15. So n by 2 is 25. Now 25. अभी हम 25 क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में देखेंगे. 25 है नहीं है, सो जस्ट ग्रेटर देन 25, दैट इज 28. सो हम ये है मिडल क्लास. हम मिडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी के एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो वैल्यू आती है उसको हम क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे. जब वो नहीं होगी तो हम जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू ढूंढेंगे, दैट इज 28. तो ये मिडल क्लास हो गई. मीन दिस इज अ मिडल क्लास. तो अब हम इस मिडल क्लास में देखेंगे दैट इज अ एफ सी मीन्स कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी. जस्ट ऊपर मीन्स जो भी मिडल क्लास होगा उसकी ओबो की कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ सी. एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ एम एंड लोअर वैल्यू इज 20. एल इज अ लोअर वैल्यू.
ये कहाँ से फाइंड करेंगे, जब हम मिडिल क्लास फाइंड करेंगे तभी। और मिडिल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, n/2 दैट इज 25। तो 25 नहीं है तो जस्ट ग्रेटर देन 25 मीन्स 28। तो ये हम मिडिल क्लास मिल गई। तो मिडिल क्लास की अबो की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स fc and frequency of middle class that is fm and L is a lower value means 20। तो अभी हम वो वैल्यू पुट करेंगे। So median is equal to L plus n/2 means 25 minus fc, here fc is 13 divided by fm is 15 and c means difference, 20 minus 30 they gives 10, so 10, so 20 plus 25 minus 30 divided by 15 multiplied by 10, so they gives 20 plus 120 divided by 15 they gives 28, so median is 28. Now mean deviation about summation of fi xi minus me. Me is the median divided by fi. So now अभी median find करना है. So this is our group data. So हमको mid value find करने होगा. So xi is this is the mid value of these one. We know that how to find the mid value. So take addition and divided by 2. And these are a frequency that is given. So summation of fi is 15 and we know that xi minus median means minus 28, so they give minus, but these are in a mod, so we write positive. So ये टर्म नहीं लिखेगा तभी चलेगा, हम डायरेक्ट ये टर्म लिखेंगे डायरेक्ट mod di. We know that di means xi minus me. So this xi minus me means 23 because of minus 23, but in the mod so positive 23 here, positive 33 and 7 and 70. Now this mod multiply by fi, so they gives fi multiply by in the mod xi minus me. So this multiply by this multiply by this multiply by this multiply by this, and 6 multiply by 17, so gives these and this value. Now take addition of whole of these plus this plus this plus this, so the summation of fi in mod xi minus me, so 478. So put the value of these, so the median value, so summation of fi xi minus me divided by summation of fi, 478 divided by 5, so 9.57. So mean deviation about median is 9.57. तो हमको ये भूलो मत कि हम जब मीडियन फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, L प्लस n/2 माइनस fc डिवाइडेड बाय fm मल्टीप्लाई बाय c कैसे फाइंड करेंगे, उसका डिफरेंस जो भी मिडिल क्लास होगा वो, और fc मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबो का जो ऊपर होगा मिडिल क्लास के वो, एंड L इज अ लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। और मिडिल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, पहले कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, एडिशन बोथ ऑफ एडिशन देन एडिशन दिस वन, एंड फ्रीक्वेंसी का एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय 2, जब कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो जस्ट ग्रेटर देन मीन्स 28, सो दिस इज द मिडिल क्लास। तो उसका उस तरीके से हम फाइंड करेंगे। नाउ सेकेंड एग्जांपल, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम median, here also median. So now हम first, so this is our continuous way, so हमको continuous way, इधर भी continuous था, so अगर here continuous नहीं होता तो हमको plus 0.5 and minus 0.5 करना पड़ता, but here these are in a continuous way, so these are class interval and this is the frequency. Now find the cumulative frequency, so 0 plus 7 that is 7, 7 plus 12 19, 7 plus 12 plus 16 35. Now these are addition and take this value, so 19 plus and 7 plus 12 plus 16 plus 19 plus 15 plus 6, so it gives 100. Now summation of all fi, summation of fi means n is equal to 100 divided by 2 means 15. अभी हम 15 देखेंगे कि 15
हियर आर 15, 50 है नहीं है, तो जस्ट ग्रेटर देन 50, दैट इज अ 79, सो दिस इज अ रॉन्ग। ये भी इधर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दैट इज अ 79, दैट इज अ FM एंड लोएस्ट वैल्यू इज 30 एंड FC इज 60। सो ये इसमें पुट करो, कहती है देखो, एंड मीन डेविएशन में ये फाइंड करना है। सो ये सब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो ये ट्राई करो घर पे, दैट इज़ फॉर होमवर्क फॉर यू एंड दिस 2 आर ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। इसमें मीन एंड मीडियन दोनों फाइंड करना है एंड इज अबाउट फॉर मीडियन। और ये इधर ज़रा करेक्शन करो एंड ये सॉल्व करो दिस वन। कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में डालो। नाउ वी आर स्टॉप हियर। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, हाउ टू फाइंड मीडियन, दैट इज L+N/2 माइनस FC डिवाइडेड बाय FM मल्टीप्लाई बाय C। सो C इज द डिफरेंस ऑफ दिस, एंड जो भी क्लास होगा उसकी ऊपर का मीन्स FC एंड जो भी क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी मीन्स FM। ओके, नाउ वी आर स्टॉप हियर।